Good morning, students. So today we are going to start our next topic of chapter 9, measures of central tendency, arithmetic mean. This is our lecture number 2nd. So chapter 9, yes, chapter 9, measures of central tendency, arithmetic mean. This is our chapter name, chapter number 9. Okay. So today we will study about the kinds of arithmetic mean. First of all, we will study the meaning of arithmetic mean. So in our last lecture, uh, we have already discussed about the introduction. Then after that, the meaning of central tendency, and then we studied about the objectives and functions of averages. And after that, we studied about the essential of good averages. Okay. Then we studied about the types of statistical averages, in which we study about the mathematical average and positional average. In mathematical average, three means are there: arithmetic mean, geometric mean, and harmonic mean. And in the positional average, the median, partition value, and mode. Okay. So मैंने आपको बताया भी था, I have already told you that कि geometric mean, harmonic mean and partition value, ठीक है, ये तीनों आपके सिलेबस में नहीं है. So in this chapter we will study about the arithmetic mean. So now arithmetic mean. Yes, arithmetic mean. What is arithmetic mean? What is arithmetic mean? Arithmetic mean is defined as the sum of the values of all observations divided by the number of observations. Okay, arithmetic mean is defined as the sum of the values of all observations divided by the number of observations. And it is ordinarily known as mean or average. Mean or average. A mean or average by a common man. And it is usually denoted by X bar. Okay. Now the kinds of arithmetic mean. Next topic is kinds of arithmetic mean. Kinds of arithmetic mean. So arithmetic mean can be computed in two ways. First is simple arithmetic mean. Simple arithmetic mean. And second one is weighted arithmetic mean. Weighted arithmetic mean. Okay, students. So let us first understand the calculation of simple arithmetic mean. So it computation can be discussion in the following series. First is हम इनको तीन सीरीज के अंदर हम स्टडी करेंगे सिंपल अरिथमेटिक मीन को. फर्स्ट इज इंडिविजुअल सीरीज. यस, फर्स्ट इज इंडिविजुअल सीरीज. Second, second series is discrete series. Okay. And third is continuous series. Continuous
series. Okay. So first, in individual series, how to calculate the arithmetic mean in individual series. So first of all, individual series. What is individual series? What is individual series? So students, individual series. Individual series is the series. Individual series is the series in which items are in which items are listed singly. Okay, so that is each item is given a separate value. Each item is given a separate value. Okay, so it means individual series do not have frequency of the item. Okay, indiviजुअल सीरीज के में कोई भी आइटम्स की फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, if marks of 10 students in class plus one are given individually, so it will form an individual series. Okay, अच्छा एक एक्चुअली हमने अभी मैंने आपको बताया था कि जो टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक मीन, simple arithmetic mean and weighted arithmetic mean. So what is simple arithmetic mean and what is weighted arithmetic mean? So simple arithmetic mean, in it all items of the series are given equal importance. सभी आइटम्स को ना हम इसमें सीरीज में जितने भी सभी आइटम्स गिवन होगी उन सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं. एंड बट इन वेटेड अर्थमेटिक मीन, in it different items of the series are accorded different weights in accordance with their relative importance. इस जब हमारे पास सीरीज में जो आइटम्स गिवन होती हैं उन सभी आइटम्स को उनकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग, उनकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उनको वेटेज दी जाती है. जब वेट गिवन हो जाता है एक सीरीज आइटम्स के साथ, तो वो हमारा क्या होगा, जब वहां पर करेंगे तो वेटेड अर्थमेटिक मीन, उस वाले सीरीज से जब हम अर्थमेटिक मीन को मेजर करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, वेटेड अर्थमेटिक मीन. क्लियर स्टूडेंट्स? सो now we discuss about the simple arithmetic mean. Okay, so in simple arithmetic mean, three series are there: individual series, discrete series, and continuous series. Individual series is the series in which items are listed singly. That is, each item is given a separate value. Okay, so calculation of arithmetic mean in individual series. Yes, calculate of arithmetic mean in individual series. Yes, students. So in individual series, so mean is computed by taking the sum of all observations and dividing the sum by number of observation in the set. So there are three methods to calculate the arithmetic mean of individual series. First method is direct method. Direct method. Second is shortcut method. Shortcut method. And third is step deviation method. Step deviation method. Okay. So now the first is direct method. How to calculate the arithmetic mean by direct method? First, direct method.
Yes, students, direct method. So according to this method, all the units are added and then their total is divided by the number of items. And the quotient becomes the arithmetic mean. Okay. So now what steps we are taken? First step जो हम लेंगे, first is let the item observation, let the items be. पहले तो हम item को मानेंगे, let the item be first steps. First step is let the item be x1, x2, sorry, yes, x2, x3, okay, and xn. Now the second step is add up the values of all the items. Add up the values of all the items. All the items and obtain the total and obtain the total, that is sigma x, any summation x. Now the third step is find out total number. Find out total number. Find out total number of items in the series, that is n. Okay, and the fourth step is divided total values of all items summation x by total number of items n. Okay, that is x bar is equal to summation x by n. Okay, so here x bar is equal to, x bar is, yes, x bar is arithmetic mean, summation x, that is sum of all the values of the items, and n is total number of items. Now we take an example. Yes, example, the marks obtained by the 10 students in a subject are students A, B, C, D, E, F, G, H, I, and J. Okay, and then marks are given 85, 60, 85, 60, 50, 75, 55, 40, then 55, 70, 45, and 65. Okay, now मार्क्स, यस मार्क्स अब क्या हुआ है, देखो एक सिंगल सीरीज आपको दिया है ना, एक सिंगल सीरीज है, तो ये हमारी क्या हुई, इंडिविजुअल सीरीज, एंड मार्क्स इज एक्स. ओके, नाउ हाउ टू कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन? फर्स्ट ऑफ ऑल sum up all the all the items in a series, इन सबका सम अप कर लो, तो इनको इनका टोटल करने के बाद आपके पास आ जाता है सिग्मा एक्स यानी समेशन एक्स, that is yes 600, and number of items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
So n is equal to 10. Okay, students. So now total marks, total marks, total marks summation x is equal to 600 marks, and total number of items, total number of students is equal to n is equal to 10. Okay, now the arithmetic mean, it means x bar is equal to summation x by n. It is the formula, x bar is equal to summation x by n, that is 600 by 10 is equal to 60 marks. Okay, now the arithmetic mean is equal to 60 marks. This is our direct method. How to calculate the arithmetic mean by the direct method. So this is the procedure. Okay. Now the next is shortcut method. Actually, the direct method is generally used when there are few items and the size of the figure is small. If it is not so, so there would be considerable difficulty in the calculation of mean. So to remove this difficulty, a shortcut method is used. So what is the shortcut method? Yes, shortcut method. Shortcut method, yeah. So under this method, any figure is assumed as the mean and deviation are calculated from this assumed mean. like ये जो शॉर्टकट मेथड है, इस मेथड में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास आइटम्स गिवन होगी उसमें से किसी भी एक आइटम को अज्यूम मान लेंगे. ठीक है, एनी फिगर इज अज्यूम्ड एज द मीन एंड डेविएशंस आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द अज्यूम्ड मीन. उसके बाद हम उस अज्यूम्ड मीन जो हमने उस आइटम में से, उस सीरीज में से एक आइटम को अज्यूम करा है, तो उससे हम डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे. ओके, देन द नीड फॉर शॉर्टकट मेथड अराइजेस when there are large number of observation or it is difficult to compute arithmetic mean by direct method. Okay, so this method is called assumed method. इस मेथड को हम क्या बोलेंगे? assumed mean method. इस मेथड का दूसरा नाम और क्या है? assumed mean method. Okay, so what methods we are taken? Step what step, sorry, so steps क्या होगा? First step is let the item be x1 x2 x3 x4 xn तक. Okay, then second step is decide any item of the series as assumed mean. किसी भी आइटम को आप अपनी सीरीज में से assumed mean a डिनोट कर लो, a मान लो. then calculate the deviation d of the items from assumed mean a, that is deduct a from each items of the series, that is x minus a. After that, take the sum total of deviations and denote it as sigma d. Next step is find out the total number of items in the series, that is n, and after that apply the formula. So what is the formula? The shortcut method. X bar, yes. What is the formula? X bar is equal to a plus summation d by n. This is the formula for calculating arithmetic mean by shortcut method. Here x bar is equal to arithmetic mean. Okay, a is equal to assumed mean, d is equal to x minus a. It means deviation of variables from assumed mean, and n is equal to number of items. Okay, so now we take an example. Example is calculate arithmetic mean of the marks given in in the example. So देखिए, आप देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है. फर्स्ट स्टूडेंट्स,
हम इसमें वही वाला एग्जांपल लेंगे जो हमने अपना पीछे जो लिया था ना डायरेक्ट मेथड के अंदर, सेम एग्जांपल हम वो लेकर उससे हम शॉर्टकट मेथड से अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करेंगे। सो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। Okay, now the marks it means X, that is 85, 60, then 50, after that 75, then 55, 40, 55, 70, 45, and 65. Okay, now first of all, let the decide any item of the series as assumed mean. So हम यहाँ पर क्या डिसाइड करेंगे बच्चे, हमने ये देखना है, हम वो आइटम डिसाइड करेंगे यहाँ पर, वो उस आइटम को एज्यूम मानते हैं जो हमारे बिल्कुल मिड में आए। मिड का मतलब ये नहीं कि आपके पास सीरीज में जहां भी मिड में कोई चीज दी हुई है, मिड में कोई वैल्यू दे दी, आपने काउंट करे कितने हैं, मिड में से ले ली, नहीं, क्योंकि हमारे पास जरूरी नहीं होता कि जो सीरीज है वो आपके पास असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में गिवन हो। तो हमें, लेकिन हमें एज्यूम्ड मीन लेना है, तो हम एक ऐसी आइटम को लेंगे जो जितनी भी वैल्यूज दी हुई है उन वैल्यूज में से वो मिड वाली आइटम चुने, ताकि क्या हो कि हमारी कुछ आइटम्स माइनस के आ जाए, कुछ प्लस के आ जाए। जब वो आपस में एक दूसरे से कट जाएंगी तो हमारे पास आगे कैलकुलेशन करने में इजी होगी, कैलकुलेशन हमारी छोटी हो जाएगी। तो हम ऐसी आइटम को एज्यूम्ड मानते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर देखो, मैक्सिमम जो है हमारे पास क्या है 85, एंड मिनिमम जो वैल्यू है वो हमारे पास है आई थिंक 40। सो अगर हम यहाँ पर किसी को भी ले सकते हो आप, वैसे तो मैं यहाँ पर एज्यूम मान लेती हूँ 50 को। ओके, सो नाउ वी कैलकुलेट डी डेविएशन। यस, डी डेविएशन डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए को हमने क्या माना है यहाँ पर 50। ओके, सो नाउ x minus a, this is our x is x minus a is equal to 50. So 85 minus 50, that is 35. Then 60 minus 50, 10. After that 0. So 75 minus 50, that is 25. Okay, 25. After that 5, then minus 10, then plus 5, then 20, minus 5, and 15. Okay, now the summation of d, सभी प्लस के आइटम्स को अलग प्लस कर लें और माइनस वाली अलग से ऐड कर लें, एंड देन दोनों का माइनस करें तो समेशन डी आएगा आपके पास 100. ओके, एंड n इज इक्वल टू 10. Now we calculate the arithmetic mean by shortcut method. So what is the shortcut method? X bar is equal to, yes, shortcut method. X bar is equal to a plus summation d by n. Okay, so a is equal to 50 plus summation d is equal to 100 and n is equal to 10. Okay, now calculate all this. तो ये आपके पास कैलकुलेट करके कैसे आएगा, 10 से 10 निकल गया आपका, यहाँ 10 रहेगा, 50 प्लस 10 इट मीन 60. सो एक्स बार इज इक्वल टू 60 मार्क्स. ओके, दिस इज आवर अर्थमेटिक मीन. डायरेक्ट मेथड में भी आपने देखा था, देखिए ऊपर डायरेक्ट मेथड आपके पास 60 ही आया था जब हमने डायरेक्ट मेथड किया था, 60 मार्क्स. ओके, एंड बाय द शॉर्टकट मेथड एक्स बार इज इक्वल टू 60. क्लियर स्टूडेंट्स? So that's all for today. Have a good day.